राधे राधे, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या जी, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।
राधे 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 सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। राम सवारी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति बहन बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सभी देव। कहाँ लिखा दिया? जय हो सभी देवी और सज्जनों की।
राधे 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 राधे। सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी लाइव के लिए। सभी लोग लाइक करते किए हैं, लाइक कर लीजिए आप लोग। प्रतिभा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे।
बाय 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 बाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कमेंट डिलीट मत करिए आप लोग। राधे राधे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे 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 राधे। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
राधे 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 राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राधे राधे। सभी का बहुत 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 धन्यवाद भाई। खुशी बहन कहाँ गायब हो भाई? प्रकट हो। खुशी बहन का 150 हुआ भी नहीं हो, खुशी बहन गायब भी हैं, बहुत देर से नहीं दिख रही हो। मतलब हम बोल नहीं रहे हैं तो लग रहा है कि हम देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं सबका कमेंट। जो लोग हमारे बोलने का फायदा उठा रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम भी आएंगे लाइव में। फिर हमसे शिकायत कोई ना करे, बस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ 4 लोगों का 150 हुआ है बस, बाकी किसी का भी नहीं हुआ है। हाँ, ये नहीं सुनील भाई, हम किसी की लाइव में जाते पता है, संजू कमेंट करो, संजू बहन कमेंट करो। संजू बहन के पास तो कोई काम ही नहीं होता। संजू बहन तो फ्री रहती है दिन और रात, बाकी सबके पास काम है। हम कहते काम करो, हम भी करते हैं, हम भी करो, लेकिन बीच बीच में कमेंट करते रहो। ये नहीं कि हाँ 1-2 कमेंट करके उसके बाद गायब हुए तो सीधा आए फिर लास्ट में बाय करने। फिर हम बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे वही। एक तो ये सुबह सुबह इतनी आवाज़ यहाँ पे आती है कि इसकी वजह से हमें आवाज़ बंद करना पड़ता है। खुशी बहन अगर लाइव में हो और हमें सुन रहे हो तो प्रकट हो जाओ मोबाइल में। नहीं तो फिर हम आज शाम को लाइव में आए नहीं, पक्का बता रहे हैं।
सुनील भाई बाय बाय बाय। और खुशी बहन हम भी आएंगे बाय बाय करने के लिए। शाम को मिलते हैं आपके लाइव में। बाय बाय के समय। हाँ 3 कमेंट करने के बाद फिर आएंगे सीधा पंजा लेके दोनों हाथ कांग्रेस का। सीधे सीधे बाय 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 खुशी बहन। ठीक है बहन ओके बाय 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 बाय। ठीक है आप जाइए अपना क्लास करिए। ओके बहुत बहुत धन्यवाद।
सनम का दिल चाहता तेरा। राधे 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 सभी को राधे राधे। 3 की वाचिंग है और जो हमारे लाइव में अभी इस समय है आप लोग कमेंट करिए। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, वाचिंग 3 की दिखा रहा है, तो कौन कौन है लाइव में प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि कई लोग तो चले गए हैं। रेणु शुक्ला, राधे राधे रेणु बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 लोग कौन है भाई? लटके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हैं लाइव में तो कमेंट करिए, नहीं तो लटके रहिए, कोई गिनती नहीं होगी लटके रहने की। जय माता दी, जय माता दी। रेणु बहन क्या कर रही हो? सिर दर्द कर रहा है बहुत तेज से हूँ दीदी। अच्छा जी, तो रहन दो बहन, इतना कोई वो नहीं है, परेशान मत होइए। सिर दर्द हो रहा है तो रहन दो, रख दो मोबाइल, सो जाओ। हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं रेणु बहन कि हम कहेंगे कि नहीं आप जुड़े रहो। हम ये कहेंगे कि आप जाओ और आराम कर लो, आपकी लाइफ चलेगी तो हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चले जाओ, फिर भी हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं।
दिल चाहता है। विजय सीताराम, सीताराम विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भी वहम न पालिएगा कि आईडी नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए आईडी पहचान रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लाइक करते चलिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए। समय हमारा लाइक क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? बहुत अच्छे हैं हम, आप बताइए आप कैसे हैं? हम कह रहे हैं बिल्कुल भी वहम न पालिएगा कि हम आईडी नहीं पहचान रहे हैं। आईडी तो इंसान के बोलने के तरीके से पहचान लेते हैं। लाइक कर लीजिए। अच्छी बात है, सभी लोग अच्छे रहिए। चौकी भी ले जाइए, चौकी यहीं रखी है। राधे राधे और कुछ नहीं हो रहा है, पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। हम बैठे हैं, है कि नहीं पंडित जी? यही हो रहा है।
राधे 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 राधे। एक की वाचिंग में दिख रही है भाई, ऐसा कैसे? जी को नमस्कार और सीताराम। पंडित जी आपको विजय जी नमस्कार बोल रहे हैं और सीताराम। पूजा कर रहे हैं अभी। सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम सीताराम। राधे श्याम सीताराम। सीताराम सीताराम। जय माता दी जय माता दी। राधे राधे। रेनू बहन हमारी फास्ट फास्ट कमेंट कर रही हैं भाई।
सीताराम 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 सीताराम। कुमार विजय जी का भी कमेंट आ रहा है, बढ़िया फर्स्ट फर्स्ट कमेंट, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू बहन आपको, विजय जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम 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 सीताराम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कमेंट आ रहा, बढ़िया फर्स्ट फर्स्ट कमेंट, क्या बात। दीदी जी प्रणाम, खुश रहो भैया, मस्त रहो।
राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे 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 राधे। राधे श्याम सीताराम।
जी चाय नाश्ता हो गया। जी चाय नाश्ता हो गया। जी चाय नाश्ता हो गया। राधे 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 सभी को राधे राधे। बिहारी चले आए
राधे 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 सभी को राधे राधे। बाय 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 विजय जी, बाय बाय। राधे 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 सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे।
रेनू बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। एक लाइक किसने ले लिया भाई? देने के बजाय लाइक लेना कौन सी बड़ी बात है? गजब आदमी है।
पूरा दिन चलाएंगे, पूरा दिन लाइट बंद नहीं करना है आज। सीता बहन बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। लाइव की टेंशन मत लीजिए, आज पूरा दिन लाइव चलेगी। हाँ वही सोचा है हमने भी, रोज रोज का झंझट खत्म। आज सारा बवाल है खत्म कर देगा लाइव का। एक ही दिन में सब पूरा कर लो। क्या करें, रोज रोज से ऊब गए हैं। सवेरे से अपना लाइव चलाओ। तो कल आपको फुर्सत दिला देंगे, कल आप पूरा दिन चला लेना। आज आप अपनी सारी आईडी हमारे में लगा दो, कल हम आपके में अपनी सारी आईडी लगा देंगे। बस टेंशन में रोज रोज का बवाल है खत्म। रोज की हाय हाय, इनके लाइव में जाओ, उनके लाइव में जाओ, उनको सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट करो। संजू बहन कमेंट करो, संजू बहन कहाँ चली गई? हाँ तो तुम लगी रहो, थोड़ा थोड़ा चला चला के। कितना हुआ अभी तक? हो गया होगा आपका, थोड़े बहुत चाय बचा हो, बाकी हो गया होगा भाई। तुम्हारा तो हो गया है पक्का। सही सही बताओ, अच्छा कितना हुआ? सही सही बताती नहीं हो कभी। पता नहीं कैसी तुम हमारी फ्रेंड हो, यही नहीं समझ में आता हमारे तो। हंसो मत, बताना है तो सही सही बताओ। 400 हुआ बस। तब भी भैया बहुत करीब आ गए हो बाबू, बहुत करीब आ गए हो, लगभग लगभग। बहुत क्या और टेंशन है, हम तो अभी बहुत ही पीछे हैं फिर उस हिसाब से। राधे राधे। बात तो सही। क्या करें, पता है काम इतना होता है। हम किसी को नहीं कहते हैं कि कमेंट करो कमेंट करो, ऐसा हमने कभी से नहीं कहा। हाँ बहुत देर तक कमेंट नहीं आता तब कहते हैं कि एक आध कमेंट डाल दो, उसके बाद काम करो। लेकिन किसी के भी लाइव में जाओ तो लोग ऐसा ट्वीट करते हैं, कमेंट करो संजू बहन कहाँ चली गई, कमेंट करो। अब ऐसे लगता है लाइव को छोड़ करके बाकी जिंदगी में कोई काम नहीं बचा है, बस वही मोबाइल पकड़ के लटके रहो पूरा दिन।
ऐसा नहीं होता है। जो लोग इस तरीके सपोर्ट करवाते हैं उनके लाइफ में हम जाना पसंद नहीं करते हैं। भाई अपना घर परिवार छोड़ करके तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सही बात है। हम ऐसे लोगों की लाइफ में ज्यादा दिन जाते भी नहीं है, 1 दिन 2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम जाना ही बंद कर देते हैं। जाओ भैया। अरे भाई घर है, परिवार है, अब मोबाइल चार्ज भी करना है, लगा दिया, कहीं पता लगा पहुंच पाए तुरंत। संजू बहन कहाँ चली गई, कमेंट करो कमेंट करो, ये वाला शब्द से तो हमको बहुत नफरत है भाई। अरे अगले को भी पता है कि वो लाइव में है, उसका हाथ फ्री होगा तो वो तुरंत कमेंट करेगा। हमने कई लोगों की लाइव छोड़ दिया इसी चक्कर में, बहुत लोगों की लाइव हमने छोड़ दिया। हमारा धीरे पूरा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये शब्द से बहुत ज्यादा नफरत है। हम सुबह से चालू कर देते हैं, हम एक बार भी किसी से नहीं कहते कि हाँ कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, इतनी बार तो हम कभी नहीं कहे। और हम जिसके भी लाइव में जाते हैं वो ऐसे टॉर्चर करता है जैसे लगता है कमेंट ना हुआ कोई हलवा है। सही बात है, सब कुछ देखना पड़ता है, परिवार तो पहले देखना पड़ता है। सही बात है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो हमारे पति देव घर में रहे तो मोबाइल की तरफ ज्यादा जाओ नहीं, कहीं मोबाइल, दिन भर मोबाइल, तबीयत खराब हो जाएगी। दिन भर मोबाइल, रात भर मोबाइल, तुम लोगों को मोबाइल से पेट भरता है कि नहीं भरता है? इसी चक्कर में तो हम सुबह चलाते हैं लाइव, ज्यादा शाम को भी चलाते हैं, तो शाम को भी ये नहीं रहते, दिन में सपोर्ट करते हैं जिसका, उसका तो है। जिसका सपोर्ट शाम को करते हैं उसके गेम में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कभी कदार दोपहर वाले में भी कोई कोई आता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या किया जाए। हम तो उसको बोलते हैं जिसका कमेंट बहुत देर तक नहीं आता, जैसे लाइव में आया 2-4 कमेंट करके चला गया, फिर लास्ट में बाय करने आया, तो हम उसको कहते हैं भाई बीच बीच में कमेंट कर दिया कर, बाकी नहीं तो हम किसी को नहीं कहते। भैया अपना काम करते रहिए। सही बात है। परिवार में सब लोग सोचते हैं दिन भर इनका मोबाइल में दिमाग लगता है बस। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजों को करते हुए तब जाके कहीं ऊपर से पता लगा, थोड़ा देर के लिए रख करके कहीं किसी के पास बैठ गए, उसके बाद जब कमेंट करने गए तो लोगों की बोली सुन करके तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ चली गई थी संजू बहन, किसी और के लाइव में थी क्या? अरे ले, और भी कोई काम तो है नहीं, बस लाइव 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 बचा है। कल तो हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, हमने सोचा था ना किसी से सपोर्ट लेंगे ना किसी के लाइव में जाएंगे। लेकिन फिर हमने कहा चलो चलने दो, कोई बात नहीं।
तो हमारे लाइव में रहती हो सीता बहन, देखती हो कौन हमारे लाइव में लगातार कमेंट करता है। जितने लोग हैं लाइव में लगातार कोई भी कमेंट नहीं करता है, तो हमसे क्यों? कोई कर नहीं सकता है भाई, मोबाइल लेके बैठा रहे दिन भर खाली कमेंट करता रहे। दवा बता दीजिए माता दी, जय माता दी। बड़ी दीदी आपको एक बात बोले, आप गुस्सा तो नहीं होंगी? नहीं भैया बोलो। बड़ी दीदी आपको एक बात बोले, गुस्सा तो नहीं होंगी? ये आप वही वाला फंडा अपना रही है क्या, जो आपके में था, जो आपके में कल वो कर रही थी? बड़ी दीदी एक बात बोले, गुस्सा तो नहीं होंगी? आपके लाइव में आपने भी टैप कर दिया क्या उसको? बड़ी दीदी एक बात बोले, गुस्सा तो नहीं होंगी? मैं थी उस समय लाइव में बहना। अपनी वाली ट्रिक हमारे मत आजमाओ। हाँ, हम लाइव में जरूर कमेंट कम कर पाए, लेकिन एनी टाइम लाइव में रहते हैं, कमेंट देखते रहते हैं सबका। बड़ी दीदी एक बात बोले, गुस्सा तो नहीं होंगी? बड़ी दीदी एक बात बोले, गुस्सा तो नहीं होंगी? कल आपके में हो रहा था ये। वही आज रेनू बहन हमारे साथ कर रही है। जब एक बार आया तब तो हम सोचे चलो कुछ कहना होगा, लेकिन जब दोबारा आया तो हम समझ गए कि वही फंडा अपना रही हो आप। सीता बहन ये बताओ, दिन भर की वाचिंग कितनी मिल जाती है तुमको? तुम भी 2 टाइम चलाती हो, हम भी 2 टाइम चलाते हैं। यार वाचिंग क्यों नहीं मिल रही है ये बताओ? इतने लोग जुड़े रहते हैं, इतनी देर हम लोग लाइव भी चलाते हैं, लेकिन दोनों टाइम का सबका मिला के भी 10-12 घंटा नहीं मिलना चाह रहा है। ये बताओ जा कहाँ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज तो मेरे समझ से बाहर। हम कई दिन से सोच रहे हैं किसी से पूछें। क्या चल रहा है? रेनू बहन एक बात पूछे, गुस्सा तो नहीं होगी? एक बहुत जरूरी बात है जो आपसे पूछना है। सच में पूछे, गुस्सा तो नहीं करोगी? वही तो मेरे भी नहीं समझ में आ रहा है यार कि इतना जो है हम लोग, अरे हम खुद ही पूरा दिन रिटर्न में लगे रहते हैं। 4-5 मोबाइल खुद की ही होती है। वही तो मेरी खुद की ही 3 मोबाइल है, ये ही लगी रहती है। उसके बाद में बाकी हमारे बेटे की लगी है। 4-5 मोबाइल हमारे घर लगी रहती है। उसके बावजूद भी बताओ दोनों टाइम का हमको 10-11 घंटा मिलता है। तो इसका क्या मतलब समझे हम कि क्या हो रहा है? तो किसी को कुछ कहो तो गुस्सा सबको हो जाती है। तो फिर
अब वही चीज है कि जो अगला कर रहा है या तो वही हम भी करते रहो, बताओ क्या कर सकते हैं। फिर अभी हम करेंगे तो लोगों को इतना लगता है एक जगह कहीं आईडी दिख जाए बस, आपकी आईडी वहां देखा था, अरे हम भी तो देखते हैं, हम पागल हैं क्या, हमको भी दिखता है। नहीं आपको नहीं कह रहे हैं, बता रहे हैं किसी को भी अगर अपनी आईडी कहीं एक दूसरी जगह तुम लाइक भी करने गए हो, जैसे क्या होता है चलो सबका लाइक बढ़ जाए, तो लाइक के लिए एक आईडी से हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे हम सोचते हैं चलो लाओ उनको लाइक कर देते हैं, लाइक किया तो एक दो कमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो लोग कहते आपकी आईडी हमने 2 जगह देखी थी, अरे 2 जगह देखो 3 जगह देखो, हम तो सबकी देखते रहते हैं 10-10 जगह, क्या कर रहे हैं सर, अपनी अपनी देखो, मेरी क्यों देख रही हो। हमको खुद को वाचिंग नहीं मिल रही है, आईडी हमारी दिख रही है चारों तरफ। क्या बताएं, बड़ी मारा मारी हो गई है इस लाइव के चक्कर में, दिमाग खराब हो जाता है। मन तो यही करता है कि बंद करके सारी चीजों से मुंह ले ले हम बस। सही बात कह रही हो रेनू बहन, लेकिन जो लोग ये चाची कर रहे हैं ना, उनके लाइक वो खुद 3 मोबाइल रखे हैं, वो 10 जगह चेक करते रहेंगे। हम लोग तो कभी चेक ही नहीं करते, हमारे पास भी मोबाइल है, हम तो कहते को जहाँ जाना है जाओ भैया, बस हमारे लाइफ में सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए इतना बहुत है, हम बवाल नहीं पाल पाएंगे, हम चेक करके क्या कर लेंगे बताओ। वो लोग 10 जगह चेक करते रहे, किसी की लाइफ में अगर चलो कि हाँ चलो लाओ लाइक ही कर दें उसको, लाइक बढ़ जाए, उसमें भी दिक्कत है। सही बात है। तो हम कहते चलो मान लो अगर हमारी आईडी किसी के में लगी है तो लाओ दूसरे का अगर लाइव चल रहा है तो उसको लाइक कर देते, चलो उसका भी लाइक बढ़ जाए। उसके लिए भी लोग, कई लोगों ने कहा, तुमने कहा यार ये तो गलत बात है, क्या होता है। ईमानदार लोगों का गुजारा नहीं है, बेईमान लोग बढ़िया से ले रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, उनके लिए कोई असर नहीं। राधे 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 राधे। अब इस समय हमारा लाइक इतना कम बढ़ रहा है, पहले ही 19 था, लेकिन फिर एक किसी ने हटा लिया, 18 हो गया, अभी जब आप आए एक और आए 20 हुआ। लाइक भी नहीं बढ़ता तो गुस्सा आती है। सरिता बहन के लाइव में कल गए थे, सरिता बहन भी कह रही थी संजू बहन कहाँ चली गई थी, कमेंट नहीं कर रही हो, आवाज सरिता बहन देखो कब से गायब है। एक दो कमेंट 3 कमेंट करके उसके बाद से फिर गायब हुई हैं। जब हम जाते हैं तो हम लगातार, तो भाई हम नहीं कर पाएंगे, ना हमसे लो ना हमें लो लगातार कमेंट, बस ईमानदारी से ऑन करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं हमें ऑन बता के गायब हो जाओ।
इस समय सरिता बहन हमारी बात सुन भी नहीं रही है, ना उनकी वाचिंग दिखा रही है। सुन रही होती तो जरूर आती बोलने के लिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। सरिता बहन लाइव में है तो कमेंट करिए। क्योंकि वाचिंग एक ही दिखा रही है, एक तो हमारा ही लगा है। यार लाइक को क्या हो रहा है, अभी 20 हुआ था फिर 19 हो गया। जिसको लाइक हटाना रहा करे लाइक मत करा करो, कोई इतना जरूरी नहीं है लाइक करना। देख रही हो सीता बहन, कब से आवाज दे रहे हैं, यही होता है और कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए वाचिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने इतने घंटे हम लोग लाइव चला रहे हैं, वाचिंग के नाम पर कुछ नहीं।
सरिता बहन लाइव में हैं कि नहीं हैं आप? एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 कमेंट आया है सरिता बहन का। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है। आप खुद देख रही हो कि हम कब से बुला रहे हैं। कम से कम हमको कितना टाइम हो गया बुलाते हुए। आदमी का अगर मोबाइल ऑन है तो आदमी एक बार तो सुनता है कि नहीं सुनता है। पढ़ाई नहीं कर रहे, कमेंट देख रहे हैं कि कमेंट के बाद से गायब हुए हैं लोग। उसके बाद से आधा घंटा हो गया हमको बोलते हुए, आधा घंटा से हम बुला रहे हैं। भाई खुद सोचो, 0 की वॉचिंग दिखा रहा है। इतने लोग हमारे लाइव में जुड़े हैं और बुलाने पे भी किसी को आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे लाइव में नहीं है। बस केवल हमारे में 4-6 कमेंट कर दिया। अभी लास्ट में आकर के 4-6 कमेंट कर देंगे, बस हो जाएगा 150। तुम 150 देख लो, खुश हो जाओ। हमें लग रहा है यही हाल रहेगा ना तो हम तो सबके लाइव में जाना बंद कर देंगे। हम सिर्फ जितना हमारे पास है उतने चला के वही लगा देंगे, बस वही से चलाएंगे, बस हम बंद कर देंगे। हमारा दिमाग खराब होता है यार। इतनी मेहनत से समय निकाल समय दिया जाता है, जब अगला सही से ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो फायदा क्या है। तो हो ही जाएगा। 12 कमेंट करने के बाद से अभी तक, और सब इकट्ठा आया है 12 कमेंट एक साथ। उसके बाद से अब बुलाने पे भी जू नहीं रेंग रही है कान पे। अब हम भी यही करेंगे। हमसे अगर किसी ने सवाल किया तो फिर हम बताते हैं उसका। बस वही चीज तो है ही है, वही है ही है। किसी और के लाइव में रहो, उसके बाद किसी के लाइव में जाओ, फटाफट फटाफट 4-10 कमेंट कर दो, उसके बाद में फिर निकल लो। फिर लास्ट में जाओगे तो हो जाएगा 150। हम जाएंगे ही नहीं ऐसे लोगों के लाइव में, बंद। सही बात है, कोई फायदा नहीं, ना हमारा भला हो रहा ना अगले का हो रहा है। तो इससे अच्छा किसी का तो हो जाए। जो हम कह रहे थे कि दोनों टाइम 3-3 घंटा लाइव चला रहे हैं, 10-10 15-15 जुड़ रहे हैं। अगर 1-1 घंटा सब लोग दे रहे हैं, सबको 1 घंटा देते हैं, सब 1-1 घंटा दे रहे हैं, तो 15 दूनी 30, 30 घंटा कॉमन सी बात है कि 30 घंटा हुआ ना। और जो अन्य आदमी जुड़ रहा है उसको ना जोड़ो, जो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दे के गया उसको नहीं जोड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी 9 घंटा 8 घंटा मिलता है, जिसमें से 5 से 6 मोबाइल तो हमारा खुद का लगा होता है। तो इसका क्या मतलब है? तो हमें 5-6 घंटा कल हमारा 8 घंटा मिला था, 8 घंटा।
कल का मैंने देखा था 8 घंटा मुझे मिला था, किसी 10 घंटा, किसी दिन 12 घंटा ऐसे मिलता है। यही हाल रहेगा तो हम सबकी लाइव में जाना बंद कर देंगे, हम अपने से ही अपना चलाएंगे बस। पूरा दिन मगजमारी करो, घर में 4 लोगों से बातें सुनो। चौबीस घंटे में एक ही बार जुड़ता है। हाँ बहन, 24 घंटे में एक ही बार जुड़ता है। नाइट की हम कहाँ चलाते हैं, हम तो दिन ही का चलाते हैं। तो 12 घंटा नाइट वाला निकल गया, घंटे में तो हम सपोर्ट ही करते हैं। ये देखो अब खुशी बहन अभी आ रही हैं। अच्छा खुशी जा आ रही हैं, हाँ। तो अब हम मान के चलो कि चलाते हैं इधर, 2-2.5 घंटा इधर चलाते हैं, 2-2.5-3 घंटा उधर चलाते हैं। नहीं, हमारा 24 घंटे का जुड़ता है। हाँ हो गया खुशी बहन, देख रहे हैं हम। हम भी लगा देंगे 6 बजे से, ऐसे गायब रहेंगे। ऑन कर देंगे, चलता रहेगा। 200 क्या, हम 400 कर देंगे। तो उसके बाद में हमारा जुड़ जाता है, 1:30 से 2 बजे के बीच में जुड़ जाता है दिन में। डेढ़ से 2 के बीच में जुड़ जाता है वो। कल का तो वॉच टाइम देख के हमारा पूरा दिमाग हिल गया था। खुद सोचो कि एक टाइम में अगर आपकी लाइफ में 10-12 लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको अगर दोनों टाइम 24 घंटे का अगर 8 घंटा आपको मिलता है तो आप क्या सोचोगे, जिसमें से 3-4 का वॉचिंग अपना खुद का है। जितने घंटे चला है उतने घंटे लगा है। उसके बाद भी 8 घंटे की वॉचिंग देख करके कल से हमारी बुद्धि एकदम खराब हो गई है। ऐसे कैसे काम चल पाएगा, ना बढ़ रहा है ना कुछ नहीं हो रहा, दिमाग खराब हो रहा, घाटा अलग से जाता है। मन ही नहीं करता चलाने का अब तो। मेरा दोनों टाइम का जोड़ के 18 घंटा 17 घंटा, कभी कभी 20 घंटा आता है। चलो फिर भी ठीक है। हमारा भी आता है कभी कदार 18 घंटा, कभी 16 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा ऐसे आता था, लेकिन अभी इस समय देख रहे हैं। सही बात है। हम अपना कल का देखे तो हमारा दिमाग खराब। हम वॉच टाइम कभी देखते ही नहीं थी, कभी नहीं देखते। बस ये सोचते थे कि आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा है सही से। तो हमने देखा, हमने कहा यार हमारा 8 घंटा, सुबह 7 बजे से उसके खोपड़ी खपाते हैं। 7 बजे अगर वैसे ठंडी का महीना ना उठो, सोचो चलो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लड़का बाहर पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन इसी लाइव के चक्कर में 6 बजे से उठते हैं, नहाना धोना सब करके तब चला के बैठते हैं, काम भी करते रहते हैं। और ऊपर से वॉच टाइम देख के कल से हमारा दिमाग पूरा हिल गया है। साल भर का 4 साल में ना पूरा हुए, जैसे चल रहा है इसे चलता रहेगा तो।
अभी देख रही हो, हमको लग रहा है 1 घंटे के करीब होने वाला है, 45 मिनट से ज़्यादा हो गया हमने जब से सरिता बहन को बुलाना शुरू किया है। अब ये वहाँ पूरा करके ही यहाँ आएंगी। बस यही चीज़ है, हम कहते हैं आप समय किसी के पास नहीं है, ऑन कर दो, लेकिन ईमानदारी से ऑन रहेगा तो वॉचिंग तो उसको पूरी मिलेगी। हम तो मार्केट भी जाते हैं तो हम मोबाइल देखते रहते हैं, ऑन करे हैं फिर भी ये देखते रहते हैं कहीं बंद ना हो गया हो। नहीं बोल पा रहे हैं, ज़्यादा शोर शराबा है, नहीं उस पर कमेंट कर पा रहे हैं, हाथ फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी देखते रहेंगे। कल गए थे वहाँ बार बार मोबाइल ये देखते रहे, बल्कि हमको बोल भी रहे थे, कह रहे हैं अब तुम्हारा दिमाग बाहर भी मोबाइल में ही लगा है। तो हमने कहा नहीं, किसी का समय दे रहे हैं तो उसको ये तो देखना पड़ेगा ना कि उसको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम दे ही रहे हैं। वही विजय बहन क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। हम तो सोच रहे थे कि कोई ढंग का ग्रुप बना लेते हैं फिर भी सही हो जाए। एक ग्रुप में ढंग के आदमी रहा जो कि जिसको किसी से कोई मतलब ना हो, सभी लोग अपना अपना टाइमिंग रख लो, उसी हिसाब से सबका भी जितनी जिसके पास आईडी हो सब अपनी अपनी लगा करके एक एक लोगों को सपोर्ट करो, 3-4 लोगों को बना लो भाई, बढ़िया दुनिया बवाल है। पूरी दुनिया में भटकने की क्या ज़रूरत है। सही है। सुनील चंचल यार तो चंचल, हमें तो अभी कोई ढंग का मिला ही नहीं।
क्या हुआ में से लाइव में जब मैं अरे सही है। सही भी है, कम से कम ईमानदारी से लगी तो रहती है। हमारी तो दोनों आईडी खाली रहती है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अगले ने हमको एक से किया है। हम उसके लाइव में जाते हैं, सोचते हैं लाओ यार दोनों लगा दे, किसी को समय मिल जाएगा। हमारा तो ऐसे भी कुछ इस समय नहीं हो रहा है, तो हम लाइव नहीं चला रहे हैं, तो लाओ किसी का सपोर्ट ही कर देते हैं। लेकिन ईमानदारी का ज़माना नहीं है अब, ये चीज़ भी मैंने देख लिया। नहीं, जाओ घूमो टहलो चले आओ, वैसे भी खुद को तो कुछ मिलना नहीं है। चल रहा होगा। राधे 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 सभी को, राधे राधे। 0 की वाचिंग हमें मुबारक हो। एक शहर में तो लोग ज़्यादा ही उड़ते हैं संजू बहन, अगर उस हिसाब से आपको मिल जाए तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाए। अरे बहन, उस हिसाब से मिल जाता तो अभी तक आधा तो क्या होता, कम से कम आधे पे तो पहुंच ही गए। ना ज़्यादा पहुंचते तो 2 तक तो पहुंच ही जाते। सबकी 2-2 आईडी लगी रहती है। ईमानदारी से किसी की नहीं लगती।
क्या आज जब बंद हो जाएगी धान की अबे, हम्म, राधे 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 राधे। वाचिंग देख लीजिए अपने अपने में, वाचिंग बिल्कुल नहीं, जीरो दिख रहा है, एक दिख रहा है दूसरे मोबाइल में। जी चाय नाश्ता हो गया सीता बहन, का सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है, अभी तो हम लेटे हैं। इस समय हमारे यहाँ काम सारा खत्म हो गया है। चाय नाश्ता सब बन लिया, खाना खाना भी बना लिया, बर्तन धो दिया, सब फिट करके अब आराम से बैठे हैं। अब आज लाइव चलाएंगे, पूरा दिन चलाएंगे, किसी की लाइव में नहीं जाएंगे, हमारा अपना जुड़ा रहेगा।
जिसने जिसने हमको ईमानदारी से किया है उसके उसके लाइव में जाएंगे, सपोर्ट कर आएंगे बस। बाकी चलाएंगे अपना लाइव आराम से। साला दिन भर हम सपोर्ट ही करते रह जाते हैं, पूरा दिन सपोर्ट करते हैं। अपना लाइव बंद करने के बाद दिन भर करते हैं, शाम को अपना लाइव चलाते हैं, फिर रात 11 बजे तक सपोर्ट करते हैं। घर वाले भी हमसे परेशान हो गए हैं सपोर्ट के चक्कर में। घर वाले कहते हैं दिन भर सपोर्ट 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 करती रहती हो। सही है बहन, आपका बढ़िया है। उसके बाद जब के उठते हो तो सही है, बढ़िया है भैया, लगाए रहो। एक बार वॉच टाइम पूरा हो जाए बस, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। एक टाइम लाइव आएंगे बस। फिर ईमानदारी से मतलब खत्म हो जाएगा ना। जो भी आवे ऐड देखे, उसके बाद जाए घूमे टहरे, मजा लिए। अभी तो पहले मेंबरशिप के लिए सोचो। मेंबरशिप 12 से 15 लोगों की मेंबरशिप लगती है बहना। उसके बाद सुपर चैट। बाकी चीजें बाद में सोचते रहना। आपका तो लगभग लगभग हो गया है, अब आपको सोचना चाहिए। मैं मेंबरशिप होता है 60 रुपए से लेकर रुपए तक, 150, 250। जो आपकी मेंबरशिप लेगा उसके अकाउंट से 100 रुपए का लेगा तो 100 रुपए हर महीना कटेगा, और उसका लेगा 250 का लेगा 250 रुपए हर महीना कटेगा। 60 रुपए वाली लेगा तो 60 रुपए हर महीना कटेगा। 1 साल तक मेंबरशिप ये होती है। यही में तो लोग हट जाते हैं। मेंबरशिप कोई किसी के लेना नहीं चाहता, वही लेगा जिसके ऊपर भरोसा होगा या उसकी उसको बाद में लेना हो।
मेंबरशिप जो लोग ज़्यादा ज़्यादा ले लेते हैं तो जल्दी डॉलर बनने लगता है। इतने समय के लिए तो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं। तो कोई नहीं लगा तो कैसे होगा हम लोगों का, तो कोई नहीं लगा तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं लेंगे? जिसका हम लेंगे उसका ले लेंगे, जो हमारा ले लेंगे उनका हम ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो लोग मेंबरशिप लेंगे उनका नाम आपके मोबाइल में दिखेगा कि लिए हैं कि झूठ बोल रहा है। जिससे गूगल पे चला रहे होंगे उसी से मेंबरशिप ले सकते हैं, जो लोग गूगल पे नहीं चला रहे हैं वो नहीं ले सकते हैं। गूगल पे, फोन पे कुछ भी चला रहे हैं। नहीं, फिर डॉलर नहीं बनेगा, रुका रहेगा उसी पे। साल 2 साल लग जाएंगे डॉलर बनने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ले लेंगे आपका। जब आपका पूरा हो जाएगा तो बताना, अपने बेटे से कहेंगे हमारा बेटा कर पाता है ये सब चीज़ें, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे कहेंगे तो कर देगा। एक बार जोड़ देगा, उसके बाद कटता रहेगा हर महीना अपना 100 रुपये 150 रुपये जो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक अपने पति वाले से ले लेना, गूगल पे चलाते तो होंगे।
गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते होंगे कुछ तो चला ही रहे होंगे। आज के ज़माने में तो कोई है ही नहीं जो नहीं चलाता है। पति देवता आपके गूगल पे नहीं करते हैं क्या? कितने महीने हो गए आपको लाइव चलाते हुए? सीता जी कहाँ हो? कितने महीने हो गए आपको लाइव चलाते हुए? चार पाँच महीने हो गए लाइव चलाते? हाँ हो गया होगा। हमसे पहले से आप लाइव आ रहे हो। तब तो हमने चैनल भी नहीं शुरू किया था। हम्म। आपके पति देव भी चलाते हैं वो गूगल पे? पहले लाइव नहीं आती थी, मैं आई थी तो 10। अच्छा, पहले लाइव नहीं आती थी, मैं आई थी तो 10 मिनट में मैं सोचती थी कि क्या हो रहा है। चला करती थी, मुझे लगता था या कोई चीज है। हमने तो अभी तक अपना वॉच टाइम पूरा नहीं देखा है कि हमारा पूरा कितना, मतलब टोटल कितना हुआ है। रोज वाले में कल देखा था कितने घंटा मिला है, बाकी टोटल नहीं देखा अभी तक। बहुत पहले एक बार देखे थे, उसके बाद से फिर नहीं देखे। टोटल वाला किसी दिन देखेंगे। कहाँ तक पहुंची गाड़ी?
वो तो उससे देखते हैं ना, क्या बोलते, वाईटी स्टूडियो से, जहाँ पे रोज का दिखता है, जो लाइव हमने चलाया है आज, उस लाइव में कितना हमको व्यूज मिला है, कितना हमें वॉच टाइम मिला है, वहां से देखते हैं। टोटल वाला तो नीचे दिखता है, 4,000 3,000 घंटा वाला वो ऑप्शन होता है, वहां दिखता है। तो वहां मैंने काफी दिन से नहीं देखा है। उसमें वाईटी स्टूडियो में जो रोज वाला मिलता है, रोज वाला देख लेते हैं। कौन से वीडियो से हमें कितना वो मिला है, कितना हमें लाइव से मिला है, कौन से लाइव में कितना घंटा मिला है, यहाँ से देखते हैं ना। नहीं, ऊपर वाला सही नहीं होता है। ऊपर वाला तो बिल्कुल सही नहीं होता है। ऊपर वाले में जो दिखता है वो कुछ नहीं है, वो सब बेकार है। अंदर वाईटी स्टूडियो में जहाँ 4,000 घंटा हमें टारगेट दिया जाता है, 3,000 घंटे 4,000 घंटे का, वहाँ पे जो दिखता है टोटल वाला, वो सही होता है, वो रियल है। ऊपर वाला तो घटता बढ़ता रहता है। और वही वाईटी स्टूडियो में से ऊपर आप क्लिक करोगे ऑल पे, उसमें कई ऑप्शन आते हैं, उसमें जो है आपको ये दिखता है कि मतलब हमने आज का कितना है हमको, और कौन सी वीडियो से कितना वॉच टाइम मिला है, से लाइव से कितना मिला है, ये चीज़ें ऊपर ही से दिख जाती है। उसके बाद 4,000 घंटा वाले में देखो टोटल दिखता है। देखा था हमने टोटल कई दिन बहुत दिन पहले देखा था एक बार, उसके बाद से नहीं देखा। मैं ऊपर जो टोटल दिखता है वहाँ, मैं ऊपर जो टोटल दिखता है, जहाँ निशान बना रहता है ऊपर की तरफ को, लाइव, देखते। अच्छा जी, आज वहां से देखना, यहाँ 4,000 घंटा का टारगेट मिला है आपको, वहां से देखना। मैं आपको स्क्रीन करके दिखाऊंगी कहाँ से अच्छी अच्छी हूँ। कोई नहीं दिखाना। जहाँ पे तुम बता रही हो वहां से भी देखा जाता है। एक होता है वाईटी स्टूडियो में, देखो जैसे वाईटी स्टूडियो ऑन करो तुरंत दिखता है, इधर व्यूज दिखता है, उधर वॉच टाइम दिखता है, वो वॉच टाइम रियल नहीं होता है। उसके वाले में जाके देखोगी तो उसमें हो सकता है तुम्हारा और भी हो, तो कम दिखाता है।
वॉच टाइम देखने चली गई क्या अपना? अभी देखा, मैंने भेजा है आपके पास। कितना हुआ? हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। अभी जब लाइव बंद करेंगे तो देखेंगे, फिर तुमको हम स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे कि कहाँ से हम देखते हैं। तो सही तो देख रही हो, पूरा डिटेल में देख रही हो, और क्या चाहिए। पूरा कर डालो बहना, टेंशन मुक्त रहो। हम भी सोच रहे हैं जैसे जैसे पूरा हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए, हम भी क्या करें, बड़ी दिक्कतें। एक तो घर से इतना टारगेट है। हो गया है आपका। बाय बाय।